Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is history. Today is the review of this unit, and that is lecture number 17. So my dear students, these are all the student learning outcomes that we have covered in this unit. Today we will revise them all with the reading pages, and by the end I will provide you with the assessment sheet. So my dear students, in lecture number 1 we discussed about history and the early settlements. So define history. It means inquiry and the knowledge from the inquiry, and history is a branch of knowledge that records, explains past events. And what is a settlement? So my dear students, basically एक settlement ऐसी होती है जो कि किसी जगह आबाद हो जाती है, किसी भी आबादकारी को हम settlement कहते हैं. When people settle somewhere and make their houses, do farming to fulfill their needs, so this is called a settlement. Okay, my dear students, then in lecture number 2 we discussed about the most earliest civilization, that is the Mesopotamian civilization. So what is meant by Mesopotamia? Mesopotamia means between two rivers. And where was it settled? It was settled between the two rivers Tigris and Euphrates. Describe its social class. यहाँ पे class system था जहाँ पे first kings आते थे, then priest, and then the noblemen, the fighters, and then they had the slaves or the people who were associated with the agriculture. So they had a very strong class system. What is ziggurat? Ziggurat were the temples where the people used to worship. In lecture number 3, we discussed the reasons behind the decline of Mesopotamian civilization. So give some reasons behind the decline of Mesopotamian civilization. So my dear students, इनके decline की वजूहात ये थी कि pollution बहुत ज़्यादा हो गई थी. इसके अलावा जो इनके rivers थे वो agricultural land से थोड़े ऊंचे थे, तो पानी once they entered into the fields, तो it didn't got the passage to go out, and then it used to dry up there, तो जिसकी वजह से salts जो थे they used to settle in the fields, जिसकी वजह से जो land है it became unfertile. Then we discussed about the Egyptian civilization. So where was Egyptian civilization settled? It was settled near Nile River. Describe its social class. बहुत strict social class थी यहाँ पे. अमीरी गरीबी का तस्वुर बहुत ज़्यादा था. बादशाह kingship होती थी यहाँ पे भी. बादशाह सबसे ऊपर होते थे. Then came the priest, noblemen, and they also had slaves. So what were the reasons behind the decline of Egyptian civilization? एक तो इनका class system था. इसके अलावा invaders हो सकते हैं, drought हो सकता है, diseases हो सकती हैं, and there could also be the reason of floods or drought situation हो सकती है. Then we discussed about the Indus Valley civilization. So where was Indus civilization settled? Indus civilization was settled near river Indus. And describe its social class. So they had the class system of rich and poor, but we did not see any kingship over there. हमने बादशाहत का निज़ाम वहाँ नहीं देखा. जो भी बहुत strict यहाँ पे social system नहीं था, लोगों को equally treat किया जाता था. Economic जो revenues थे वो equally जो है distribute होते थे rich and poor में. अमीरों के घर जो हैं वो थोड़े बड़े होते थे, गरीबों के घर जो हैं वो छोटे होते थे, लेकिन दोनों के घर ही पक्की ईंटों से बने हुए थे. Both shared the same sewerage system. What were the reasons behind the decline of Indus civilization? So Indus civilization के decline की कुछ वजूहात ये हो सकती हैं. Aryans may have invaded them. There could have been famine or diseases, pollution. These could be the reasons of the decline of Indus Valley civilization. So describe the key events, social and political, during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So दो जो है treaties sign की गई थी, agreements for internal and external affairs in the Medina. So रियासत मदीना में, one was Mawaqat Medina and other was Charter of Medina. And describe the key events during the Khilafat Rashida. Khilafat Rashida में Charter of Medina को जो है वो as a democracy का जो वो है वो रखा गया, यानी कि मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया. और इसके अलावा तमाम जो कॉमन इश्यूज थे they were resolved under the अशरा मुबशरा,
और जो मेन इश्यूज होते थे दैट वर डिस्कस्ड ओपनली विद द पीपल गैदरिंग्स अंडर द खलीफा के अंडर जो है लोगों की गैदरिंग्स के अंदर उनको सॉल्व किया जाता था. ओके, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ योर प्रोविंस इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो आपके प्रोविंस की क्या रोल है इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तमाम जो सूबे हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था और कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे मुसलमानों की अक्सरियत थी उन सूबों में. सो दैट्स व्हाई दे बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि बहुत सी माइनॉरिटीज जैसे कि SP बहादुर सिंह जो थे और जोगिंद्रा नाथ मंदाल जो है, दीज आर सम ऑफ द नॉन मुस्लिम लीडर्स हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. जब इन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट किया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो जाना चाहते हैं. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद आजम इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. दिन रात एक की इन्होंने और पाकिस्तान जो है वो हासिल किया. इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की. इन्होंने मुसलमानों को ये बात बावर करवाई कि आप हिंदुओं से एक अलग कौम है और आपको जो है वो अलग मुल्क जो है वो मिलना चाहिए. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद अलामा मोहम्मद इकबाल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अलामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर, फिलोसोफर और एक थिंकर थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया और मुसलमानों को ये बात समझाई कि आप जो है वो हिंदुओं से अलग हैं. और अपनी पोइट्री के ज़रिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुसलमानों को समझाई जैसे कि दो कौमी नज़रिया. डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ना सिर्फ औरतों की बेहतरी के लिए काम किया बल्कि शी वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर, वुमेन लीडर इन इंडिया, जो कि मुस्लिम लीग की एक्टिव मेंबर थी. शी ऑल्सो अटेंडेड वेरियस कॉन्फ्रेंसेज लाइक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कायद आजम का ये राइट हैंड थी. उनको हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बनने से पहले बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद भी. शी वॉज एन एक्टिव पॉलिटिकल लीडर. डिस्क्राइब द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. सो खैबर पख्तूनख्वा की बहुत रिच हिस्ट्री है जो कि आर्यन से और गंधारा सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है. इसके बाद बहुत से इन्वेडर्स यहाँ पर आए जो कि कुछ अरसे तक हुकूमत की इन्होंने. पहला मुसलमान इन्वेडर जो था दैट वाज शाह महमूद गजनवी, जिनकी वजह से मुसलमानों का इक़्तिदार जो है वो सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ और ये मुगल एम्पायर तक गया. और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द ब्रिटिश टुक ओवर और ब्रिटिशर्स के बाद 100 साल हुकूमत करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा gave vote in the favor of Pakistan and that's how it became a part of Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम जो है वो NWFP था, which is meant as North Western Frontier Province. Name the leaders who worked for the development of Khyber Pakhtunkhwa. That is Abdul Qayyum Khan and some other leaders. They worked for the development of Khyber Pakhtunkhwa. So my dear students, for practice you can download this worksheet. This is your assessment evaluation sheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, look at the map carefully and locate the three ancient civilization. Also write their names along with the rivers. So my dear students, आपको यहाँ पे मैप दिया गया है. आपने इनमें से तीन जो ancient civilization है उनको find out करके तीनों civilizations के name लिखने हैं with the rivers along which they were settled. Compare the social system of Mesopotamian, Egyptian and Indus Valley civilization. तीनों civilizations के आपने social system को आपस में compare करना है. Then you have to compare the reasons behind the decline of three civilization, Mesopotamian, Egyptian and Indus Valley civilization. तीनों के decline की वजूहात को आपने आपस में compare करना है. What was the role of Qaid-e-Azam in creation of Pakistan? What is Tehreek-e-Khatm-e-Nabuwat? Also explain its importance. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, this was your evaluation, your test. You will submit it to your teacher for grading and marks. So my dear students, for homework, you will read complete unit number 4 if you have missed anything. So this will also enhance your reading skills. So my dear students, in this unit, we have discussed some ancient civilizations like Mesopotamian, Egyptian and Indus Valley. We have discussed their timeline and the reasons behind their decline.
We have also discussed the roles of different leaders in the creation of Pakistan. हमने minorities के रोल को भी डिस्कस किया इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के रोल को डिस्कस किया इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा हमने खैबर पख्तूनख्वा के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ लीडर्स जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट के लिए काम किया उसके बारे में भी डिस्कस किया. आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम दिस यूनिट. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.